Good morning, students. So, in this video, we are going to learn Manufacturing Industries, Chapter 6, Grade 10th, Geography. So, in previous video, I have told you about the brief introduction of the chapter in which I explained that what we have to do in this chapter. So, now in this video, we are going to learn that content in detail. So, let us recall those content which I told you. So, mainly there were classification of industries, importance of industries, and as well as the main industries that help or strengthen the country's economy, like iron and steel industries, uh, fertilizers industries, cement industries, cotton, jute, IT, electronics, automobile, sugar, and aluminium. And we are going to discuss about its ill effects and its importance for the country's growth. Let's begin with the importance of manufacturing industries. So what are the importance that we are going to discuss in it? If you are getting this question as for 1 mark, then you can write these points as it is, like it helps in modernizing agriculture. But suppose if the question they are asking for the 5 marks, then what you have to do, you need to mold your language. So you can start point wise, like agriculture, or you can write it support agriculture. Okay, in points you need to write. You can see the pattern as well of CBSE board exams, so you will get it from the site. Number one, it so how to explain this agriculture? Same point you can write from here, but you need to give examples as well. For example, we get fertilizers, insecticides, pesticides as a product of manufacturing industries, as well as we also get the machineries, for machineries and other equipments for our agriculture. So this way you have to write this, so then your 1 point will be complete. Wide employment, so you can write as it is for the 3 marks, but for the 5 marks you have to write it like provides employment, and then you can explain it how it provides the employment. It supports the job opportunity for millions of people living in India, and it engage most of the people with it in primary level, either in cultivation of cotton. You can give examples, right? In mining people are engaged and they are earning, and they are having the job opportunities. ठीक है, and for the transportation and in market also. So you can write it, number of people are engaged to the uh, manufacturing industries this way. Then number 3, it gets the foreign exchange and strengthen the country's economy. ठीक है, इस कंट्री की इनकम इंक्रीज होती है एज वी मेक गुड्स एंड देन वी सेल इट एट इंटरनेशनल मार्केट, तो वहाँ पे हमें उससे ज़्यादा उसकी अर्निंग होती है. देन फोर्थ, improve country's infrastructure. It also boosts the country's infrastructure. And fifth point you can write by your own, it makes our life luxurious, as it provide us different machinery for different work, and it make our time consumable for other useful part. For example, you can write microwave and refrigerator, washing machine, other machinery that we use at our home that make our life easy and comfortable. Okay, by supporting examples you can write the answer. So for 5 marks these are enough, and then you can write the conclusion by your own, that manufacturing industries are the uh, backbone for country's growth and development, like this way. So now we have questions related to this content, importance of manufacturing industries, how they can ask the questions from here. Number 1, the economic strength of a country is measured by development of manufacturing industries. Explain. So these things, importance of manufacturing industries, you have to write in it by molding your language according to the question. ठीक है, in introduction you can write it, and then you can support your answer by importance. ठीक है, then conclusion you can add in it. Next question, why do we consider
manufacturing sector as the backbone of development in general and economic development. The same answer will be here. And for what are manufacturing industries important, that also the importance of manufacturing industries. So three question and only one answer you have to write, but you must be clear about how to start your answers. So let us discuss the industrial location. This is the another concept now. What are the major factors responsible for industrial location? So here we have location of an industries depends on favorable factors like availability of raw material. This is the introductory part. Then how availability of raw material. If they are asking for 3 marks, then it's okay, you can write to the point. But if they are asking it for the 5 marks, then you have to explain it. Then you need to give examples. Availability of raw material, for example, you can write here most of the steel and iron industries, these are located in near Chota Nagpur plateau. Why? Because you will get all the iron ores in that area. ठीक है, maximum number of iron ore are located in that area. Or similarly you can give example of sugarcane. Most of the sugarcane industries they are located near the field. मतलब जहाँ पे sugarcane उगाई जाती है उसके नियर बाय ही ये इंडस्ट्रीज होती है. ये एग्जाम्पल्स आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो फॉर द 5 मार्क्स. देन नेक्स्ट, availability of cheap labor. So similarly here also you can write cheap labor availability. Most of the industries they are set up near the developed areas where they can reach easily, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से आना चीप लेबर के लिए ईजी हो. चीप लेबर का मतलब यहाँ घटिया लेबर से नहीं है. चीप लेबर है सस्ती लेबर, मतलब हमें स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए फॉर माइनिंग एंड फॉर कॉटन कल्टीवेशन, जो उसकी कटिंग बिफोर जब उसको प्रोसेसिंग के लिए लाते हैं उससे पहले का जो प्रोसेस होता है उसमें चीप लेबर आपकी वर्क करती है. उसके बाद हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है इन द इंडस्ट्रीज. द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स. सो ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होनी चाहिए आपको. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी आप इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए वहाँ पे. एंड पावर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होनी चाहिए प्रॉपरली, अदरवाइज हाउ योर मशीनरीज विल वर्क ऑन. देन नेक्स्ट, प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट. मार्केट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए नियर बाय एंड उसकी, ताकि वो जो प्रोडक्ट बनाया है दैट कैन बी सेल ईजीली. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट एंड स्विफ्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो आपको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी जगह की. इसके अलावा भी कुछ हमारे पास factors है that also determine the industrial location, like facility of hospital and banking and जो भी important है रहने के लिए किसी पर्सन के. ठीक है, जैसे कोई आपके इंडस्ट्री में काम करने आएगा तो उसको प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे, रूम्स अवेलेबल होने चाहिए रहने के लिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है फॉर द इंडस्ट्रियल location, but these are the main important that you have to write in paper. Question in it, that is, explain why agriculture and industry are complementary to each other. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ आपस में कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये मतलब है इस क्वेश्चन का. तो आपने इसका लिखना है कि आपको जनरल नॉलेज होगी थोड़ी बहुत कि जैसे कॉटन कल्टीवेशन है तो कॉटन से जो प्रोडक्ट है वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है कॉटन. ठीक है, फिर वो उसको हम आगे ले जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्री में, फिर उसका आगे थ्रेड्स यार्न वगैरह बनते हैं, देन इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू क्लॉथ. ठीक है, तो एग्रीकल्चर से हमें इंडस्ट्री कैसे एक दूसरे पे डिपेंड है वो बताना है. एग्रीकल्चर, और इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर. मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती. देन
एक्सप्लेन हाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आपने इसमें ये शो करना है कि वो दोनों आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी लैंग्वेज में लिखने की ट्राई करेंगे एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी इसमें बताऊंगी। एंड आपने टू द पॉइंट बात करनी है। इस एग्ज़ाम में आप कोई भी स्टोरी लिखोगे, यू विल नॉट गेट आंसर, यू विल नॉट गेट द प्रॉपर मार्क्स। The agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity। जो आपकी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इसने आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन में हेल्प करी है। तो आप यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। एंड हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स के लिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो सारा इंडस्ट्रीज़ हम पूरा करती है, ठीक है। और इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल जाता है वो सारा आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट होता है। क्लियर? सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। नंबर 2, दे डिपेंड ऑन लेटर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स एज इरिगेशन पम्प्स। ये तो आपको मैंने एग्जांपल्स बता दिए हैं ऑलरेडी। सो इन्होंने एग्जांपल्स का पॉइंट अलग से दिया है। पीवीसी पाइप्स, मशीन, टूल्स, plastics, these all we use, farmers are using in their field, and these all are the product of industrial goods। then next we have thus, लास्ट में आपने ये कंक्लूजन में लिखना है, ये पॉइंट्स में नहीं लिखना। thus development and competitiveness of manufacturing industries has not only assisted agriculturalists but increasing their production and also made the production process very efficient। so these things you have to mention in this answer, how industries and agriculture are complementary to each other or how they are dependent on each other। then next, classification of industries, these are very important, anyone they can ask from it in the 3 marks as well as for 1 marks you need to identify, right? so let us discuss on the basis of raw material। रॉ मटेरियल के बेस पे आपकी जो इंडस्ट्रीज़ है उनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एज द नेम इंडिकेट एग्रो, इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। जो भी एग्रीकल्चरल आउटपुट्स आती है आपके पास वो सारी इंडस्ट्री को जो सपोर्ट करती है उनको कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। जैसे कि कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क टेक्सटाइल, रबर टेक्सटाइल, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, these all are the products of agriculture and then these are processed in industries। so ये बना देते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट वी हैव मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। सो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जो भी आपको मिनरल्स मिलते हैं अर्थ में से उनसे जो प्रोडक्ट्स आगे बनते हैं वो सपोर्ट करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, एंड आई टोल्ड यू दिस इज़ द की इंडस्ट्री फॉर एनी अदर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील। then cement industries and aluminium, chemical tools, machine tools जो भी आप बनाते हो, petrochemicals, these all are based on mineral based industries in according to their main role। ये ध्यान में रखना कि आपको किस बेस पे क्लासीफाई करना है इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। मेन रोल के बेस पे आपके पास आ जाती है बेसिक इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़। एक तो आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज़ आ गई, दूसरी आ गई कंज्यूमर्स इंडस्ट्री। बेसिक विच प्रोवाइड टूल टू अदर इंडस्ट्रीज़, मीन्स विच सपोर्ट अदर इंडस्ट्रीज़, जैसे मैन्युफैक्चर गुड्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज़। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, दीज आर बेसिक इंडस्ट्रीज़। एंड कंज्यूमर्स इंडस्ट्री जो आगे फर्दर इंडस्ट्रीज़ हमें यूज़ होती है, कंज्यूमर्स इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस गुड्स बाय डायरेक्ट यूज़ ऑफ द की इंडस्ट्रीज़ एंड दे आर यूज्ड डायरेक्टली बाय कंज्यूमर्स। जैसे मैं हूँ, मैंने शुगर लेनी है तो मैं शुगर इंडस्ट्रीज़ से शुगर आगे मार्केट में आएगी तो वहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। बट जो
आपका आयरन एंड स्टील से मशीनरी बन रही है, वो कौन यूज़ कर रहा है? शुगर इंडस्ट्रीज़ वाले, ठीक है। फिर वहाँ से हमें प्रोडक्ट बना के देते हैं फाइनल फिनिश्ड, एंड दैट कम्स इन मार्केट। जैसे टूथपेस्ट आ गया, पेपर, सीविंग मशीन, फैंस, दीज ऑल आर द कंज्यूमर्स इंडस्ट्री, जो कि कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, दे मेक प्रोडक्ट फॉर अदर इंडस्ट्रीज़ या मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। फॉर द इंडस्ट्रीज आर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के आधार पे आपके पास इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ एज वेल एज कॉटेज इंडस्ट्रीज़, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ तो बहुत ही स्मॉल लेवल पे होती है, लाइक यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम योर होम बाय यूजिंग 7 to 8 people can engage in it. लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रेफरेंसेस द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। allowed a set of unit at a present maximum investment is allowed ₹1 crore। तो मेन आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में याद रखना है कि इट अलाउज अप टू इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ तक इसमें इन्वेस्टमेंट आती है। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको हम कह देते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक इसमें इन्वेस्टमेंट होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। अनदर इम्पॉर्टेंट is on the basis of ownership. Industries on the basis of ownership. Ownership, you know very well that it belongs to somebody. So public sector owned and operated by government agencies, और इसके एग्जांपल्स है आपके पास BHEL एंड सेल। इनकी फुल फॉर्म भी आपको एग्ज़ाम में आती है, तो ये आपने कमेंट करके मुझे बतानी है कि BHEL की फुल फॉर्म क्या है एंड SAIL की फुल फॉर्म क्या है। जो बच्चे गूगल मीट अटेंड करते हैं उनको पता होगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट इन गूगल मीट। So now, private sector, another industry. Public sector number 1, number 2 private sector. These industries are owned and operated by individuals or group of individuals. कोई एक पर्सन भी उसको हायर कर सकता है या कोई और भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, टाटा, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज़। सो आपको इनके बेटा नाम भी पता होने चाहिए कि रिलायंस का ऑनर कौन है, ठीक है। एंड आपके पास जियो की कंपनी है, ये सारे प्राइवेट ओन्ड है, ठीक है। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज दीज ऑल आर रिलेटेड टू आवर लाइफ एंड दे ऑल्सो अफेक्ट आवर लाइफ। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज joint sector. Joint sector industries are jointly run by state and individuals or group of individual, ठीक है। फिर जैसे ऑयल लिमिटेड इंडिया जो है आपका OIL, एंड अदर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को जॉइंट करके रखती है, इसलिए इसको जॉइंट सेक्टर कहते हैं। देन कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल, वर्क और बोथ, ठीक है। जो वर्कर्स है वो भी कर सकते हैं, या वर्कर्स एंड सप्लायर दोनों मिलके भी इस इंडस्ट्री को चला सकते हैं। दे पूल द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस proportionally, such as sugar industries in Maharashtra and the coir industries in Kerala. फॉर एग्ज़ाम्पल अमूल हो गया, इसके लिए लिज्जत पापड़, ये सारी जो है आपकी कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ हैं। Now another important classification for the industries are based on bulk and वेट ऑफ रॉ मटेरियल, कितना वो हैवी है, ठीक है। तो इसके लिए हैवी वेस्ट इंडस्ट्रीज़ एंड लाइट वेट इंडस्ट्रीज़। तो हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, जो कि हैवी होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी इसमें ज़्यादा हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। and lightweight industries, for example raw material produced by goods such as electronic industries, जो इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाते हैं, ठीक है। या फिर आपकी और भी अदर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि रॉ मटेरियल जिनका लाइट वेट होता है। Question based on
it, and up to these explain the classification of industries on the basis of ownership. So ownership here spelling is written wrong, OWN, okay, ownership के बेस पे इंडस्ट्रीज आपने एक्सप्लेन करनी है. सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज अ बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. सो यू कैन सपोर्ट इट्स आंसर बाय गिविंग suitable examples. For example, manufacturing industries has not only help in modernizing agriculture, but it also supported how, because it has reduced heavy dependency of people on agriculture for their income, and by providing jobs in tertiary and secondary sector. क्या हुआ कि जब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप हुई है तब से लेके जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी है लोगों के लिए. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो है आपका एग्रीकल्चर, उससे डिपेंडेंसी ख़त्म हो के लोग जो हैं वो जॉब्स के लिए जाने लगे इन कंपनीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंडर वर्क आता है, ठीक है, तो उसमें वो इंगेज होने लगे. एंड जो टर्शरी सेक्टर है वो भी इसी से सपोर्ट होता है. और जिस कंट्री में सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ज़्यादा एनहेंस होता है, उस कंट्री की डेवलपमेंट इंक्रीज़ हुई मानी जाती है. देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़, ये नंबर 2 है आपका. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ helpful in eradication of unemployment and poverty from our country. कैसे, जैसे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वैसे ही पॉवर्टी ख़त्म होना शुरू हो जाती है. जॉब्स की फैसिलिटी होगी, सो पीपल विल अर्न एंड पॉवर्टी विल ऑटोमेटिकली इरेडिकेट. Then third point we have export of manufacturing good expands in trade and commerce with other countries, and that has bring a needed foreign exchange. ठीक है, जितना ज़रूरत है किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए वो हमारी कंट्री में अवेलेबल होने लगा है. सो ये थिंग्स आप लिख सकते हो. साथ ही साथ इसमें आपने लिखने हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, राइट. So another question we have, the economic strength. This is a long question I had already discussed, but it is for the revision that you may have it in mind. So the economic strength of a country is measured by development of manufacturing industries. Explain the statement with suitable example. So same answer you have to write in it. Manufacturing sectors has been considered as the backbone of country's development. Same questions answer, okay, with suitable examples, right. So this is all about the video, and tomorrow we will study about the textile industries. So be with us and like, share and subscribe to the channel so that you can get the useful information timely. In textile industries we will study in detail about cotton textile and jute textile, okay. So till then, take care and stay tuned with us. Thank you.